Excel trick: how to use the len function in Excel. The Excel len function returns the number of characters in a text string. Formula is equal to len before. Drag and down. In this way we have used the len function. Thank you for watching. Excel amazing fact: how many rows, columns and cells are there in Excel? For total numbers of rows, formula is equal to rows A to A. For total numbers of columns, formula is equal to columns 1 to 1. For total numbers of cells, formula is equal to B3 into B4. In this way you can count rows, columns and cells in Excel. Thank you for watching. Windows trick: the right way to copy and paste. Some people copy and paste like this. Press Ctrl plus C. Press Ctrl plus V. Press Ctrl plus C. Press Ctrl plus V. Don't do like this. First copy all the required data. Press Ctrl plus C. To get to your clipboard history at any time, press Windows logo key plus V. In this way, with the help of clipboard history, copied and pasted. Thanks for watching. Excel trick: quickest way to insert data from the web. Some people copy data from web like this. Don't do like this. Select data, then click on From Web. Copy the URL, which is a Wikipedia page for the ICC Men's T20 World Cup result. Press Ctrl plus V to paste the URL into the text box, and then select OK. In the Navigator pane, under Display Options, select the Results table. Power Query will preview it for you in the Table View pane on the right. Select Load. In this way, data can be inserted from the website. Thanks for watching. Excel trick: how to filter a data range salary up to 40,000. Some people filter range like this. Don't do like this. Select a range of cells. Press Ctrl plus Shift plus L. Select the column header arrow. Click Number Filters above the list, select Greater than or equal to. In the Custom Autofilter window, type 40,000 and click OK at the bottom. In this way the data range can be filtered. Thanks for watching. Excel trick: Excel mod function. The Excel mod function returns the remainder of two numbers after division. Insert formula is equal to mod A4 B4. Drag and down. In this way the mod function is used. Thanks for watching. Excel amazing trick: quickly insert rows and columns in Excel. Some people insert row like this. Don't do like this. I want to insert 5 rows and 5 columns. First, select a rows. Press and hold the Shift key on your keyboard. This type of arrow will appear. Click and hold the left mouse button. Drag the mouse down up to 5 rows. Release the left mouse button. Release the Shift key. You can also insert columns like rows. In this way, you can insert the rows and columns quickly. Thanks for watching.
इंटरनेट यूज करते हो? क्या पूछ रहा है भाई तू? तो ये 3 हिडन टिप्स एंड ट्रिक आपको पता होना चाहिए। मान लो आपको 10-20 जीबी की फाइल किसी को भेजना है, तो ओपन कर लो toffeeshare.com। आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइल साइज लिमिट नहीं है और आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा। अपलोड होते ही ऐसी आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसको आप कहीं पर भी भेज सकते हो, और उसके बाद सामने वाला आपकी भेजी हुई फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकता है। अगर आपको कोई भी टीवी शो, मूवी या फिर सॉफ्टवेयर गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड करना है, तो सीधा आप गूगल पे लिख दो इंडेक्स ऑफ और उसके बाद जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका नाम। फिर यहाँ पे आपको काफी सारी लिंक्स मिल जाएगी, किसी को भी ओपन करना और फिर आपको ऐसे डायरेक्ट फाइल्स मिल जाएंगी। मान लो आप गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और वो वेबसाइट आपको फोर्स कर रही है लॉगिन करने को या फिर परचेस करने को, तो आपको उस आर्टिकल की यूआरएल पे जाके www से पहले archive.is/ लगा के एंटर मार देना है। उसके बाद वो ब्लॉग या आर्टिकल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना और आप फिर बिना परचेस किए और बिना लॉगिन किए वो आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा सा होशियार बना दो। सेव कर लो इससे पहले आप लोग भूल जाओ, और डबल टैप तो अब तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा। Windows trick, create a folder without any name. Select the folder. To rename, press F2 key. After this, type Alt key plus 255 and press Enter. In this way, you can create a folder without a name. Thanks for watching.